A very warm greetings to all of you. Hope you people are doing great. I welcome you all in the channel 10 News channel, where in the show Man Ki Baat Shweta ke saath. The education has got the power to turn mirror into window. So today we do have very special guest, Sonal ma'am, who is educationist. She is the founder of Metamorphosis. She is an award-winning editor, content writer, universal healer, teaching expert, global international speaker. To more explore more about the opportunity in the educational sector and about as the topic suggests is entrepreneurship education. I'll take an opportunity to ask you questions from ma'am. Meanwhile, I request audience you can just pen down your questions in the comment box. Wholeheartedly, I welcome you, ma'am. And as Thank your you so name as as your company name suggests, change, transformation. I feel that tremendous job you have done at the time of pandemic also, not through only through education you are changing the life of a child, but also at the time of pandemic you have healed approximately 200 plus COVID patients and other 100 people who were suffering. And over to you, how you started this journey, ma'am. Over to you, please. So, first of all, is my humble thanks to you for inviting me for this wonderful interview to spread knowledge and to spread wisdom across the globe. I will be sharing this, and as the name suggests, metamorphosis. It is like when you yourself have awakened, like a caterpillar coming out from the cocoon, and when you have experienced that yes, there is no one going to be with you to help you, and there is no one going to be with you to make you traverse the journey of the darkness. That is then when I realized, when I started healing patients in pandemic, around I think 200 patients connected with me. So the moment four got healed, the fifth connected, five got healed, 10 connected. Like this, the numbers went on increasing. And it was such a horrible time that there were no oxygen cylinders available. Blood platelets were dropping down. Medicines were scarce. So that time, somehow or the other, I don't know how, but yes, definitely, when your intentions are true, when you are actually healing through the power of the universe automatically sends the people in your life. I don't call anyone. People come in your life on your own because they know that so and so person is going to heal you because we are there with that person. And if your intentions are actually true, your power is watching you. If I am doing anything wrong, if I have said anything wrong, definitely I will suffer the consequences. But as I kept on healing daily, automatically my powers started increasing. My powers were very strong. But when I started healing these patients, automatically every day the magnitude of 15, my powers were increasing. And in such severe cases, when doctors had already lost hope, a miracle through my healing was there. In the morning, I used to get the message, ma'am, thank you so much for all your healing energy. My husband is proper. My son's oxygen levels are on the normal. Because वो when you say ना वो दर्द तुम महसूस करते हो क्योंकि जो दर्द तुमने देखा है वो दर्द तुम महसूस करते हो कि अगर मैं उसकी जगह होती और मेरे पास नहीं कोई होता तो उस वक्त मैं क्या करती so that is when God himself came inside me and made me the healer to heal the people no matter whatever the problem no matter psychological financially emotionally whatever then धीरे धीरे I started this and being a speaker on 70 platforms. I'm an early childhood educator from the last 25 plus years. So all these things came into my forefront, and that time I realized that yes, early childhood education, healing, proper mindset, balanced growth, all these definitely will lead to transformation. So after being on the platforms, being an educator, I didn't find anything productive. We were going on the platform, talking about education, coming back. We were going on the platform. This went on happening from the last 1.5 year, 2 years. Then there was a stagnation period, and then I realized I need to open my own because what I want to give out to the society, I'm not able to send out. So that is when I think out of a blue, I just opened Metamorphosis and I didn't bother about whether people will connect. My intentions were right. मेरे को जो देना था यूनिवर्स के थ्रू सोसाइटी को वो अपने आप लोग जुड़ते गए एक से चार चार से 10 कर्मा बढ़ता गया अपने आप
because I never called up anyone. Please go and bring those 10 people. Please go and bring those 4 people. If my work is good, definitely people will connect. If they find something productive, God will send the people in your own life. You don't need to call back anything. So this is how metamorphosis came, when all the principles connected with me. So sweet, ma'am. Yes, truly said. And as you have healer, and you have been, give focus on the overall development of any of the child who start his journey. So, do you think these skills like being healer, and as I know you as an artist also, to check the mindset and accordingly work onto the complete holistic development of that particular Definitely. child? Yeah, definitely. See, it's not about children, it's about adults also. Because children are the most resilient, beautiful souls. They have those kind of flexibility, that malleability and elasticity to come back to the normal. If you tell two children to fight, they will fight, but next day they will be friends again. But we adults don't True. have this elasticity. We adults lack in this. As we keep growing, we start getting affected by the society doing something on us, and we try to mold ourselves into that cocoon. So unleash that cocoon, break the shell, leave the society shackles, and be like a child, be elastic, be malleable. Because you are the educator. The child is going to watch you as a parent, as a grandparent, as a Mm, society change maker, as a teacher. So whatever you will do, the child will absorb. We are talking about it takes a mm, village to raise a child. The child's mind is a sponge. But are we ourselves being this sponge and trying to press it and squeeze out the negativity? No, we are absorbing, we are taking it, we are venting it out on other people due to jealousy, due to frustration. So unless and until being true. a healer, unless and until I eliminate all these from a person, because you know, when a person connects with me, I don't tell the person कि आप मुझे ये करो वो करो. I just tell the person to type something on the phone. Through the typing, I scan the person's whole internal energy. My soul scans the internal Mm, energy. When I get this scanning, I find a lot of mismesh inside the soul. They might have done something to other. They might have spoken something bad about each other. So all these things my soul picks up, starts giving signals to my brain. Automatically, my body gets attuned to it. And first thing what I do is I remove the negativity from the person. वो ट्रैप किया हुआ है जो, बिकॉज लोगों के जी. अंदर वो क्षमता नहीं है वो नेगेटिविटी निकालने के लिए. एक ने 4 बोला, दूसरे ने 5 बोला, 4 और 5 9 हो गए, दूसरे ने 10 बोला, 19. तो ऐसे वो एक्यूमुलेट करते रहते हैं, क्या क्या किसने क्या किया. और फिर जब वो एक्यूमुलेट होता है, अभी मुझे उससे रिवेंज लेना है, अभी मुझे उसको नीचे गिराना है, अभी उसको मुझे पता बताना है. तो ये सारी चीजें जब आती है ना, हम अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं. So, in True, order ma'am. to stop your growth, yeah, in order to stop your growth, you have to let go, no matter what. Otherwise, your growth will be stopped. The same thing we have to tell the child also, 3 years onwards. Give them such beautiful opportunities, give them such beautiful zones to grow and learn. Teachers tries to create negative environment in the class. घर के प्रॉब्लम्स देख के आते हैं, फिर स्कूल में कौन क्या करता है, वो सारी चीजें एक्यूमुलेट करते हैं, वो बच्चे के ब्रेन में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो बच्चा वहीं पर ही एकेडमिकली डाउन हो जाता है. सो दैट इज वे हीलिंग एंड एजुकेशन फॉर मी केम ऑटोमेटिकली, कि मुझे इन टीचर्स को कैसे भी करके इनको अपने नेगेटिविटी से बाहर लाना है. इतना फ्रस्ट्रेशन है, इतना इनके अंदर रिजेंटमेंट है, नेगेटिविटी है. और automatically metamorphosis actually an education and a literary platform. Literary why? Because as you grow, अभी तो वो 4 साल प्रिंसिपल है, 5 साल प्रिंसिपल है. देर आर सो मेनी प्रिंसिपल्स कनेक्टेड विथ मी. जैसे सोनल हमारे पास काम नहीं है, हम क्या करें. पर जब आप प्रिंसिपल थे, आप में कितना एटीट्यूड था. जब आप 10 साल फाउंडर थे, आप में कितना ईगो था. आप वो वक्त याद कीजिए जब आप ईगो में थे और आपने क्या क्या किया. आज आप ऐसे पोजीशन पे हो जब आपको फ्री हो और आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको काम चाहिए. So when you are in a position, don't have that ego, because the graph is so fast, it will come back to the zero level immediately. So ego, attitude, they are the biggest enemies of yourself first. So try to unleash your ego. आप humble हो, humble ही रहो. डोंट उस वक्त के लिए हम्बल मत बनो कि मुझे उसके गुड बुक्स में आना है या मुझे अप्रिसिएशन चाहिए. सो फॉरगेट अबाउट ऑल दिस. यू नो व्हाट आई बिलीव इज दैट
Don't give your emotional happiness remote to others. फॉर एग्जाम्पल इफ श्वेता सेड समथिंग अबाउट मी और मैं 2 घंटे लेके बैठ जाऊं, हाँ मेरे को बुरा लग रहा है, मुझे ऐसे किया, मुझे श्वेता ने ऐसे बोला, वाई why are we always seeking happiness, and why are we seeking appreciation from others? If you are doing good work, if you are doing excellent work, don't worry, universe is going to send you the signals, आप करते चलो. There will be people, there are people in my life now also, there are people who are going to give you setbacks to make you stop doing the work that you are doing, but automatically it is you yourself, you yourself have to remove the ego, the attitude, the the frustration that is there, because you know all these become a platter of mixed dishes in our palette of life. when हम जब हम थाली खाने जाते हैं, हम True. कितने सारी चीजें खाते हैं थाली में, हमें सब कुछ पसंद आता है, कुछ चीजें ऐसी होती है हम नहीं खाते या हमारा कल्चर अलाउ नहीं करता है. तो उसी तरह से आप अपनी लाइफ का थाली बनाइए और थाली में आप देखिए कौन क्या क्या परोस रहा है. किसी चीज की आपको एनर्जी नहीं अच्छी लग रही है, एलिमिनेट इट. जो अच्छा लग रहा है सोल वो अपने आप सिग्नल देगी, हाँ True. मुझे ये चाहिए, खाना खाना है मुझे. So there will be shrikhand, there will be dahi, there will be lassi, there will be papad, there will be starters. So your soul will automatically send you signals. Okay, you have to eat. और automatically signal आएगा ये चीज का आज मुझे मन नहीं है. Why मन नहीं है? क्योंकि God ने signal भेजा है आज तुमने ये नहीं खाना है. Leave it out. So eliminate it, push it out. It's not that difficult. It is very easy. So in the same way, try to understand what your brain wants, try to understand what your body wants, and don't believe in the shackles of the society. Unleash the shackles. आप चाहे लेडी हो, आप चाहे वुमेन हो, आप चाहे मैन हो, आप चाहे बच्चे हो, आप चाहे एडल्ट हो, वट एवर, अनलीश द शैकल्स ऑफ द सोसाइटी. वो जंजीरों को अपने अंदर बांधे मत रखिए कि मैं करूँ कि नहीं करूँ. अच्छा काम है करिए, नहीं अच्छा है आपको ऑटोमेटिकली भगवान सिग्नल देगा नहीं करना है. सो लिसन, लिसन टू द वॉइस ऑफ द गॉड. ये नहीं कि अगर 4 आदमी ने ऐसे बोला है तो मैं करूँ, 4 आदमी ने मुझे मना किया है तो मैं वो नहीं करूँ. देयर विल बी पीपल, प्रोज एंड कॉन. वेइंग स्केल में बैलेंस आता है, क्या बैलेंस करना है क्या नहीं बैलेंस करना है वो आपको करना है. So automatically these are the energies that you need to take in to progress in life. And now I think now Metamorphosis is a brand name now, and I'm the only person running alone. I'm handling the whole administrative department. I'm handling the whole creative department. I'm the main person working behind it. Whatever work I'm doing, everyone is copying. Many people tell me, "Ma'am, आपका copy किया, आपका ये copy किया," but it's okay because people are lacking in skills. True that. True, ma'am. Yeah. You are rightly saying this one. And as I can understand with this thing, ki the self healing होता है वो एक process है जो हमारे Shweta, you are freeze, I some think. yeah. Now I think I'm audible. There was some network Yeah, issue. yeah, yeah, Yes. yeah, yeah. So, like, ma'am, as we were discussing about this one, this thing, like how you are helping, the children and the teacher and the parent to understand exactly and so forth their development. So, what I can understand is to understand the signal from the universe, which many people skip that part. And the second one is act according to the signal, and the second one is the elimination of the things. Elimination in the things means basically eliminating the negative thought and to move out of that zone. So what will be your tips on the self healing aspect, like if someone want to heal individual, and after understanding that, yes, and how to analyze that if someone is going into the negative aspect, and how the self healing process should be there in the day to day life. Yeah. So, like for example, this is a wonderful question. Like for example, I am a editor for the book The Whispering Miracles, available on Amazon. So, Whispering Miracles is actually about forgive and forget. Many people say, "मैम ये बहुत आसान है, आपका कहना आसान है क्योंकि आपके साथ नहीं हुआ Hmm. है." तो सोनल मैम के साथ नहीं हुआ है ऐसा तो हो नहीं सकता है ना. अगर मेटामोर्फोसिस का बर्थ हुआ है तो फिर डेफिनेटली कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि सोनल मैम ने अपना प्लेटफॉर्म खोला है. Hmm. सिर्फ सोनल मैम कहते ही नहीं है क्या हुआ है, बट कुछ तो हुआ है. So you cannot say that Sonal ma'am के लिए आसान है कहना. Sonal ma'am is trying to help people come out of that zone. I know everyone has gone through so many things. Everyone, life is a challenge. We all need curve ECG to go ahead in life. अगर सीधी लाइन होगी तो मजा नहीं आएगा ना लाइफ में. हार्ट को True. पंप करने के लिए, चलते रहने के लिए ECG Ji. हमारा कर्व होना बहुत जरूरी है, तब मजा आता है जिंदगी का.
अगर हम सीधी लाइन चले गए तो कोई फायदा नहीं है. सो व्हाट इट इज एक्चुअली अबाउट इज, आई रियलाइज दैट पीपल आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दिस, एंड आई स्टार्टेड गिविंग माई राइटर्स मंडाला थेरेपी. So Okay. mandala therapy से क्या होता है? It's not only about drawing with a pen. It's drawing with colors. Use different colors. So when you use the different colors, तुम्हारे body के 15 चक्र बैलेंस में एक एक कलर का वो रेडिएशन जाता है. आप रेड कलर देखोगे आपका ब्रेन सिग्नल भेजेगा, आप ब्लू कलर देखोगे आपका ब्रेन सिग्नल भेजेगा, बिकॉज दैट इज व्हाट योर बॉडी वांट्स, योर ब्रेन वांट्स. देयर आर सो मेनी नर्व, देयर आर सो मेनी बोन्स, सो मेनी सेल्स ब्रीदिंग इनसाइड द बॉडी. दे ऑल Hmm. वांट टू सी अ myriad ऑफ कलर्स. हम वो कलर्स को छिपा रहे हैं, हम लोगों को बंद कर रहे हैं दरवाजा कि आप सिर्फ इसी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए. एक्स वाई जेड ने मेरे साथ ऐसे किया है, अब मैं नहीं कर सकता कुछ भी लाइफ में. फॉरगेट इट, लीव इट, remove that person out for some time. Start playing with the colors. Look at the nature. Nature has such wonderful colors. 10 पेन उठाइए अपने हाथ में, पेपर लीजिए और ड्रॉ. योर थॉट्स विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट एलिमिनेटिंग. सो जब राइटर्स मंडाला थेरेपी कर रहे थे, अब लॉट ऑफ राइटर्स मैसेज मी, मैम आपने तो हमारे साथ कमाल कर दिया. Because they were not aware कि मंडाला की ये healing है. Or it is not only about drawing with a black pen. Many people have started with a black pen. Black pen is not necessary. Black pen is actually removing the negativity. हमें नेगेटिविटी तो निकालना है, बट उसके अलावा पॉजिटिव Hmm. कैसे लाएंगे? तो पॉजिटिव लाने के Okay. लिए कलर्स चाहिए. कलर्स चाहिए. वाई इज हॉस्पिटल ऑलवेज वाइट इन कलर? वहाँ बच्चे वहाँ इतने ग्लूमी क्यों होते हैं पेशेंट? क्योंकि उनको ये डर रहता है, मैं ठीक हो जाऊंगा कि नहीं, मेरा Hmm. रिपोर्ट नॉर्मल आएगा कि नहीं. सो हॉस्पिटल शुड स्टार्ट यूजिंग कलर्स, या एक ऐसा रूम बनाए जहाँ कलर्स का इन्फ्यूजन हो, तो ऑटोमेटिकली पेशेंट्स बिना दवाई के हील हो जाएंगे. इतनी शक्तियां हैं कलर्स में. Wow, आप ma'am, this so much ऑटोमेटिकली, is. yeah, see, when I was working in schools also, I used to have this homeroom period. Homeroom में क्या होता था? I just used to scatter the sketch pens. बच्चों को बोलते थे तुम्हें जो कलर उठाने, 6 कलर सब उठाएंगे. आप मानोगे नहीं, किसी ने 5 उठाया, किसी ने 6 उठाया. एवरीबडी पिक्ड अप देयर ओन कलर. वो सुबह इतने ग्लूमी आते थे, इतने उदास आते थे. अगले दिन उनको ये था कि हम तो और टीचर के पास वापस जाएंगे, टीचर हमें इतने अच्छे तरीके से सिखाती है, पढ़ाती है. So Hmm. it is not, we have started talking about joyful learning. We have started about teaching it, but are we actually right using the right implementation techniques? No, because we ourselves are not able to innovate. Innovation is buried down. कौन क्या कर रहा है उसका कॉपी करो, जाके सेशन में बोलो, सर्टिफिकेट लो. नॉलेज हो या नहीं हो, लेकिन सब कॉपी करके एक दूसरे के और जाके सेशन में बोल के आते. इफ यू डोंट हैव द नॉलेज, इफ यू डोंट हैव द एक्सपर्टीज, प्लीज डोंट डू इट. You are trying to give out wrong message in the society. बिकॉज हमें कॉलेज ग्रोइंग चिल्ड्रेन, आज कोटा में इतने सारे लोग बैठे हैं करियर के लिए, क्यों? क्योंकि उनको वो एक तरह का जोन नहीं मिल रहा है टू रिमूव द फ्रस्ट्रेशन. तो जब हमारे जैसे Hmm. टीचर्स, हमारे जैसे एजुकेटर्स वहां जाएंगे, वहां हेल्प करेंगे टू हेल्प देम कम आउट ऑफ द बैलेंस माइंडसेट, ऑटोमेटिकली हीलिंग प्रोसेस से उनके वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है. और मेरा ऐसा है कि आई डोंट गो फॉर एनी हीलिंग. आई जस्ट टेल द पर्सन टू सेंड द पिक्चर और टाइप करो कुछ मैसेज, ऑटोमेटिकली मैं स्कैन कर लूंगी. मेरे में इतनी शक्तियां हैं कि मैं स्कैन कर लूंगी बस. मिराकल्स हैव अच्छा, हैपेंड, आई थिंक. ये मैम जो मैसेज से आप कैसे एनालाइज करते हो, लाइक हाउ इट्स वेरी साइकोलॉजिकल थिंग आल्सो टू अंडरस्टैंड इन द लाइफ स्किल एस्पेक्ट आल्सो, जो बहुत एक्सपीरियंस के बाद आता है, टू अंडरस्टैंड हाउ द पर्सन इज राइटिंग, हाउ द पर्सन इज सेइंग, एंड इफ यू कैन स्पेसिफाई ऑन दैट पार्ट. Yeah, number three, there are three things. Number one is when a person sends a picture, उसके हम्म. उस वक्त का जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो सब कुछ बता देता है. उसके अंदर कितनी कठोरता है, कितनी कोमलता है, कितनी हम्बलनेस है, कितना ईगो है, कितना एटीट्यूड है, एक फेस बता देता है. वो फेक है, तुम्हें फेक प्यार दिखा रहा है या असली प्यार दिखा रहा है, वो भी वो बता देगा. दूसरा है when they type, हम मेरे मैसेज के थ्रू से मेरे ऑटो, आई डोंट नो, दिस इज अ वेरी बिगेस्ट पावर फॉर मी, दैट द सोल स्कैन्स एवरीथिंग. वो मतलब बहुत लोग मानते हैं कि मैम आपको कैसे पता चला? ऐसे मुझे पता चल गया, हमने तो आपको बताया भी नहीं. ऐसे ना, मुझे बताया नहीं लेकिन मैंने आपको बता दिया, आपने ऐसा किया है कुछ, अगर किया है तो बता दीजिए. देन दे कन्फेस कि हाँ मैम ऐसा ऐसा हुआ था. ऐसे जब आपने उस, अगर एक ने एक बोला, आपने चार क्यों बोला?
जो आपने जो Hmm. चार बोला है, आपने उसका भी कार्मिक अकाउंट इकट्ठा किया, आपका भी कार्मिक अकाउंट इकट्ठा किया, यू पाइल्ड अप योर ओन बैगेज। तो आपको वक्त लगेगा इससे बाहर निकलने में, लेकिन जिसने एक बोला वो तो चला गया ना बोल के अपना, लेकिन आपने जो चार बोला है उसको कितना हर्ट हुआ होगा। True that. True that. So these things are actually, you know, बातें होती है यूनिवर्स की, अभी बहुत लोग करने लगे, बट यूनिवर्स कहता है कि आई डोंट वांट ऑल दिस ड्रामाबाजी, जस्ट बी व्हाट यू आर। तुम अगर हम्बल Mhm. हो तो हम्बलनेस दिखाओ। आई नो सो मेनी बिग बिग फाउंडर्स एंड प्रिंसिपल्स, उनका मैं ऑफलाइन मिली नहीं हूँ, बट थ्रू डिजिटल कॉन्टैक्ट मुझे उनका पता चल गया है कि वो साइकोलॉजिकली और नेचर वाइज कैसे है। एंड दैट इज व्हाई आई अवॉइड गोइंग फॉर ऑफलाइन, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक इन द एनर्जीज फ्रॉम देम। तो ये So, सारी ma'am, it's चीजें। very important. या Yes, या ma'am, प्लीज true कट। that. Ma'am, you are rightly saying this because even in as you were, I was going through your complete introduction part, and in that it was mentioned that life skill in the life skill training also you play a vast role, where inter and intrapersonal skills are important. And I think via this method, where you are understanding others' point of view and to respond or to understand one's his or her own point पर्सपेक्टिव। of view, yes, perspective. So and mapping things accordingly, so it's gives a new dimension to the thing. Really fantastic. And ma'am, you have won many awards, like the prestigious ones, just like Nalanda Award, as well like Nalanda Pride of Education Award, Maharana Pratap Bravery Award, Swami Vivekanand Changemaker Award. So, like, what was that changing point? As I know that whatever you have gone through has made you the person you are. So, very less people understand that. Yeah. Yeah, so it is like this is. I think this has been hidden from the world. What made me this? And you have asked me this, so I will definitely confess. So it is like I was working in a school of NGO merged with a government school. So I was. I think I was on a break that time. Then somebody called me and told me, "Ma'am, do you have time for teaching?" I said, "What are the timings?" सो जब उन्होंने मुझे बताया कि एक अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको और माइग्रेंट्स हैं, उनके पास स्कूल नहीं है, पैसे नहीं है उनको पढ़ाने के लिए, एंड दैट टाइम आई रियलाइज, लेट मी नो द टाइम, इफ द टाइम फिट्स आई विल डेफिनेटली गो। आई वेंट Hmm. देयर, आई जस्ट सॉ द चिल्ड्रन। आप मानोगे नहीं कि वो एक तरह का ऐसा मोमेंट था मेरे लिए कि मेरे को भगवान ने अपने रूप में आके यहाँ खड़ा किया है कि इन बच्चों को मेरी जरूरत है। From 30, 40, 50, I had 90 children for 2 years under me. तो वो 90 बच्चों का जो आशीर्वाद है, जो 90 बच्चों का जो प्यार है, जो मैंने उनको नॉलेज दी, जो मैंने एक तरह से उनको हीलिंग भी दी आप बोलो, जो मेरे Hmm. पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे वहां पे, द स्कूल डिडंट हैव एनी रिसोर्सेज, देयर वर नो फैन, देयर वर नो water arrangement, there was no coffee, there was no Hmm. proper sitting for me. I used to sit on the ground and teach. मैं नीचे बैठ जाती थी, बच्चे भी नीचे बैठ जाते थे। वो मतलब उनको इतना अच्छा लगता कि टीचर हमारे साथ हमारे बीच में बैठ रही है। टीचर इज नॉट बॉदरिंग कि हमारे पास फैन है कि नहीं, आई डोंट बॉदर कि एसी है कि नहीं है, बस मुझे वहां जाना है, दिस इज माय कॉलिंग। और व्हेन आई वेंट देयर, आई एक्चुअली शिफ्टेड माय होल हाउस ओवर देयर फॉर 2 years। मेरा घर बन गया था वो उन बच्चों के साथ रहना। मेरे बच्चों का जो पुराना सामान था, जो वो ओवर ग्रो हो चुके थे, आई यूज्ड टू टेक ओवर देयर, converted into teaching aids, converting the project based learning, converting the स्ट्रीम बेस्ड लर्निंग। और मेरे को ये था अब मुझे यहाँ फोकस करना है, ये 90 बच्चों की मुझे जिंदगी बनानी है। ये पता नहीं मेरे साथ कितना रहेंगे, जब तक है अपनी पूरी जान लड़ा दो। तो वहां जाके मैंने पूरा कन्वर्ट किया और पूरा अपना टीचिंग शिफ्ट किया। दैट इज आई रियलाइज कि इन बच्चों को लाइफ स्किल्स की जरूरत है, बेचारों को लेस बांधना नहीं आता है, नाक साफ करना नहीं आता है, इनके पेरेंट्स को भी उतनी एजुकेशन नहीं है कि बच्चों को स्कूल कैसे भेजे। सो वही बच्चे को कैसे भी भेज देते थे, आधी शर्ट बाहर है, आधी प्रेस है, आधी नहीं है। सो एज आई वेंट ऑन गोइंग, आई एक्चुअली ग्रूम्ड those 90 पेरेंट्स ऑल्सो। तो धीरे धीरे जब बच्चे आते रहे, उनका इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि जब वो 1 साल बाद प्रिंसिपल ने देखा कि ये बच्चे तो जैसे आए थे अब वैसे नहीं है, क्या इंग्लिश बोलने लग गए, क्या इनमें ग्रूमिंग स्किल्स आ गई है, क्या क्या तमीज से बात करते हैं, इतनी कम उम्र में भी 4.5 5 साल की उम्र में बच्चों में तमीज देखो। देन पीपल यूज्ड टू कम एंड सी माय क्लास, ये कौन टीचर है यहाँ पे, कौन पढ़ा रहा है यहाँ पे। Then when they used to come and see and observe my teaching, they used to say, "Ma'am, hats off to you. Nobody can do."
आप इतनी गर्मी में बैठते हो बिना पानी, एंड आई नेवर यूज्ड टू ईट माय लंच एट अ प्रॉपर टाइम, आई यूज्ड टू ईट माय लंच एट 5 इन द इवनिंग, कि पहले वो बच्चों को मेरा वो देखना है। अगर हम अपने बच्चों को देखते हैं अच्छे से, तो उन बच्चों को क्यों नहीं, वो भी तो किसी के बच्चे हैं ना। अगर हम 21st सेंचुरी लर्निंग की बात करते हैं, तो आर यू एक्चुअली गिविंग योर सेल्फ 2100 फ्रॉम योर साइड? नो। हम सिर्फ हमारे बारे में सोचते हैं कि मुझे अच्छा करना है, मुझे अवार्ड मिले, मुझे अप्रिसिएशन मिले, True. और 4 दिन जाओगे, दिखाओगे, सोशल मीडिया में डालोगे, एक दूसरे को कॉपी करोगे, दीज आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे, दीज आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू। अगर आप अच्छा काम, आई स्टिल गो टू एनजीओ एंड टीच, बट आई नेवर पुट ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि मुझे पता है ये चीजें हिडन है, अच्छा है, ये यूनिवर्स को ही पता होनी चाहिए। पर आप सोशल मीडिया में डाल देते हो, तो इट्स नॉट अ गुड गिविंग बैक टू द सोसाइटी। गिविंग बैक टू द सोसाइटी शुड बी हिडन, इट शुड बी True, हिडन ma'am. फ्रॉम। And the passion is also really important, which you had, and we have seen that how you are working in on the individuals. So, ma'am, what are the books, as you yourself the author, but what are the books and the personality who impacted your thought process? The three books that are there on the Amazon is The Third Eye. The Third Eye is about Shiva has a third eye. वो कहते हैं ना, जब शिव जी की तीसरी आंख खुली थी, ऑल इविल वाज वॉश्ड आउट। लोग तुम्हें विष देते हैं, उसको अमृत बना के पी लो। लोग तुम्हें कड़वा बोलते हैं, उसको प्योरिटी लेके हजम कर लो। बिटर पिल्स आर गुड फॉर द बॉडी ऑल्सो। सो व्हेन आई रियलाइज इन 20 years ऑफ टाइम, मेरे साथ लोगों ने कितना सेटबैक किया, कितना कड़वा बोला, कितना मेरे साथ मैनिपुलेशन किया, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर किया, या वट एवर आई विल से, आई टुक इट इन माई स्ट्राइड एंड आई जस्ट कैरिड इट लाइक ए सट्टा इन माई बैक, एंड आई जिंगल्ड ऑल द वे। चलो इन्हीं को लेके आगे बढ़ो, यही तो मेरा हथियार है, और इसमें जो डालता जाए उसमें पाइल अप करते जाओ। फिर जब वो लगता है अब हैवी हो गया है, अब वो भर गया है, जिस स्टेशन पे तुम खड़े हो उसको वहीं पर छोड़ दो। टेक अ न्यू ट्रेन, न्यू जर्नी। पर आप वो बैग लेके चलते रहोगे, नहीं नहीं नहीं, मुझे ये बैग लेके कैरी करना है, वो आपको लाइफ लॉन्ग तक आपको पीछे पड़ता रहेगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। लोग तो करेंगे, लोग तो छोड़ेंगे नहीं। And there is one said, two things that I believe in. बाकी अपने आप चुप हो जाएंगे, बाकी जो डॉग्स होते हैं, कितना करेंगे वो, कितना करेंगे। और बहुत लोग ये बातें करने लगे हैं, when people give you lemons, make lemonade, but do you know how to make the lemonade? No, you are actually taking the content from others, you are actually copying the content from other, और अपना lemonade बना रहे हो, तो that is not lemonade. So ये सारी चीजें होती हैं। And one thing that I believe is that great minds have always encountered mediocre, great spirits have always encountered mediocre minds. अगर आप एक great spirit हो, आपके अंदर वो एक पावर है, तो आपका टाइम टू टाइम, मिनट बाय मिनट, mediocre mindset वाले लोगों के साथ झेलना होगा, उसको आप एस्केप नहीं कर सकते हो। तो अंडरस्टैंड द बैलेंस माइंडसेट। उसके ब्रेन का माइंडसेट उतना ही है, वो आगे नहीं बढ़ सकता है, उसको ये करना है, वो करके रहेगा। वो कितना रोको, तो अपना वो कहते हैं ना, हद का करने दो। एक स्टैग्नेशन पॉइंट आएगी, वो अपने आप रुक जाएगा। बट अपनी बॉडी की एनर्जी खराब मत करो, अपनी बॉडी का जो ग्रोथ प्रोसेस है उसको छेड़ो मत। So that is what I believe. Great spirits have always encountered mediocre minds. और शिवा की जो थर्ड आई है, वो जब अवेकन होती है, तो सारा इवल वॉश आउट होता है। दैट टाइम आई रियलाइज इन द पैंडेमिक, जब मेरा स्कूल भी बंद हो गया और मेरे पास कुछ नहीं था करने को, आई थॉट ऑफ अवेकनिंग पीपल, अवेकनिंग द ह्यूमंस, कि तुम्हारे अंदर एक थर्ड आई है, अवेकन इट। अगर तुम में कोई नहीं सही लग रहा है, या कोई सराउंडिंग सही नहीं लग रही, कोई सिचुएशन सही नहीं लग रहा, जॉब तुम्हें वो कंटेंट सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है, लीव इट। ओपन योर थर्ड आई, अंडरस्टैंड, लीव इट, छोड़ दो उसको, बढ़ो आगे। तो शिवाजी की, शिव जी थर्ड आई वो कहती है, एवरी ह्यूमन हैज अ थर्ड आई। यू हैव टू चैलेंज योर सेल्फ, यू हैव टू बी योर ओन एनर्जी, और आपको वो पावर होनी चाहिए कि कौन मेरे साथ क्या कर रहा है, आगे बढ़ो। तो सब ह्यूमन की थर्ड आई खोलना था। आई कनेक्टेड विद एजुकेटर, एजुकेटर ने अपना एक्सपीरियंस लिखा कि उनकी थर्ड आई, कि हाँ, ह्यूमंस डू हैव अ थर्ड आई। So, ma'am, like as you have taken your challenge, you have considered your challenge your weapon. तो मुझे लगता है कि हर किसी को अपने challenge को एक weapon की तरह use करना चाहिए अपने growth के लिए. Like you are now author also, you are healer also, you are artist also, you have a love for old songs also.
So I think via all these things you are helping other, and these kind of counselings are really important where people should understand what exactly they want from their life. That is really important. Ma'am, now my question is like, as the topic is the entrepreneurship and the education. So, what do Yeah. you think in the next 10 years, what will be the complete scenario of the virtual education and real mode education, and what Uh, the teacher scopes for the teacher will be there? Over to you, ma'am. uh, See, I'll tell you one thing. The scope for the teacher is every teacher wants to get appreciated. Number one, जब तक आप उनको अप्रिसिएशन नहीं दोगे, नो मैटर वो चाहे कितना भी कमजोर हो, कितना भी वीक हो, कितना भी वो लर्निंग प्रोसेस में है। वो कहीं रेडी होके तुम्हारे टेबल पे नहीं आया है, वो वहां से ग्रो होगा तुम्हारे साथ। पर आप उसको ग्रो होने का प्रोसेस नहीं दोगे तो वही वो स्टंट हो जाएगी, उसकी ग्रोथ उसकी स्टंट हो जाएगी, आपको ऑटोमेटिकली एनर्जी नेगेटिव जाएगी। सो इट इज ए टू वे कनेक्शन प्रोसेस। So, as a principal, as a founder of the school, as a stakeholder in the society in education, take the talents of the people, take the talents of the young educators और उनको मोल्ड करो। उनको नहीं आता है मोल्ड करना, उनको नहीं आता है क्योंकि उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया है। बार बार मुझे चार लोग कुछ बोलते हैं, मुझे गिरा देते हैं, मेरे वर्क के एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करते। वो मेहनत तो कर रहा है ना, कोशिश तो कर रहा है ना, आप उसकी कोशिश को सराहिए तो सही। आप सराहना ही नहीं चाहते हो और आप खुद ही एप्रिसिएशन लेना चाहते हो तो वो तो बात नहीं है ना फिर। So this is going to be the face of the teaching industry because many people talk about leadership and all, and I have encountered many leaders who are so bad that they are the ones who are trying to create a negative energy in the team. Normally leaders create the negative energy. लीडर्स अगर अच्छे होंगे, लीडर्स अगर ये चीजों से बाहर निकलेंगे तब वो अच्छी टीम बना पाएंगे। आपके टीम में तो चार लोग खराब होंगे ही होंगे, बट आप कैसे हो वो ज्यादा मायने रखता है। आप किस तरह से वर्क करते हैं वो ज्यादा मायने रखता है। आई ऑलवेज टेल माई टीम मेंबर, मेरे बारे में मत लिखो, मेरे आई नो आई एम डूइंग गुड वर्क, आपको मेरी तारीफ करनी है करो, बट बी टू अ लिमिट। अदरवाइज द माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी इज, हाँ देखो सोनल मैम के साथ ये लोग फ्लैटरी कर रहे हैं इसीलिए सोनल मैम ने ऐसे किया। इट इज नॉट दैट। फॉर मी, whether you are very established person or whatever you are, for me your behavior, your character, your ethics matter a lot more than your achievements। आपके अचीवमेंट्स मोमेंटरी पीरियड के लिए है, आफ्टर दैट व्हाट, क्वेश्चन मार्क। फिर आप मेरे पास आओगे, सोनल मैम आप हमें काम दो ना, आप हमें दो ना। फिर सोनल मैम को वो वक्त याद आ जाएगा कि आपने उसके साथ ऐसे किया था। बट वो कहते हैं ना, सोनल मैम को वो कहते हैं कि मानवता की देवी है यार, वो तो कितना भी बर्दाश्त कर लेगी फिर भी वो हमारे साथ हाथ जोड़ेगी। सो there has to be a limit to all this. There has to be a balanced mindset. There has to be ethics. These things matter a lot आने वाले जनरेशन में, आने वाले बच्चों में, क्योंकि इंटरव्यू में अभी ये नहीं पूछा जाएगा तुम्हारे क्वालिफिकेशंस क्या है, तुम्हारी लाइफ स्किल्स देखी Hmm. जाएगी। और लाइफ स्किल्स क्या True. है? तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा पर्सनालिटी, तुम्हारे विचार, तुम्हारे थॉट्स, कितना तुम बोलते हो, आर दे बीइंग सीन और नो। बोलना और करके दिखाना उसमें फर्क है। बोल तो तुम देते हो बड़े बड़ी जगह पे जाके, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मैं ऐसा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो वक्त बताता है। सो आने वाले टाइम में व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर 10-15 years, वी हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द अनसीन चैलेंजेस ऑफ लाइफ विच वी ऑल्सो डोंट नो अब आगे क्या होगा, Hmm. which we were not prepared to accommodate to the tech savvy world of this generation। but True. हमारे अंदर वो नॉलेज थी, वो पावर थी कि हम अडेप्ट हो गए और हमने ये अडॉप्ट किया। सो अडेप्टेशन एंड अडॉप्शन मॉड्यूल्स आने चाहिए, चाहे कुछ भी हो। वो ये बच्चों को भी 3.5 साल की उम्र से सिखाना है टिल दे स्टार्ट अर्निंग। बिकॉज जरूरी नहीं कि 18 साल का बच्चा तैयार हो गया है। True, ma'am. So you are rightly saying this, and as we can see that the points which you have told all together is that the listening to oneself is really, Shweta, there is a label coming in the front, can you remove it? Wim yeah, Tech. yeah. I request team to kindly. I think, ma'am, they are actually our partners. So, Okay. yeah. So, ma'am, really, it was wonderful having interaction with you because these are the important thing of the real life, and which really we understand, we really talk about, which you have highlighted. The internal listening is really important to connect with the universe, and when we can only connect with universe when we are real. The real me is really important,
And the third one is that the change in the leadership skill. If we want the change to happen, the leadership skill has to be enhanced. We have to improve ourselves in order to create new leaders. Thank So you yeah, once so again. yeah. So for me, what I believe is that knowing others is intelligence, knowing yourself is true wisdom, mastering others is strength, mastering yourself is true power. Remember, the journey towards self-awareness is not a destination but a continuous process. There will be Yes. challenges and setbacks, but each one is an opportunity to grow stronger and more attuned to yourself first. I am here to remind you that you possess an incredible inner strength, and with self awareness, you can tap into it to create a life of peace, balance, and fulfillment. Why not start it today? So, education is Thank you. there. Yes, ma'am. And education is a very powerful weapon if it's rightly used. And thank you once again from 10 News channel. And we are looking forward to have more session with you, like on the, especially on the mandala art style, the hobbies structure, and many more topics. Thank you once again. And audience, keep on watching 10 News channel, Man Ki Baat, Shweta ke saath. Thank Thank you. you so much. Namaste. Thank you so much. Thank you.